अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स की नेशनल बुक फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। पहली एक्सरसाइज करेंगे जो इस साल ये नई बुक आई है 10 की फेडरल बोर्ड ने इसको फेडरल बोर्ड के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ ये अप्लाई जा रही है। नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है और इसमें जो पहला चैप्टर है वो कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें ताकि आपको इस बुक की वीडियोस जो है लेक्चर जो मिलते रहें। इसमें जो पहला चैप्टर है वो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जैसे पिछले ये बुक में जो थी हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक थी उसमें क्लास 9 में था। इसमें जो है चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 का कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? हमें पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका हम स्क्वायर रूट जो है नहीं फाइंड कर सकते थे। नेगेटिव नंबर्स हो, जो भी नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जा सकता, इसलिए एक लार्ज नंबर सिस्टम की जो है ज़रूरत पड़ी है जिसमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट किया जा सके। तो कम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हम नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं उसमें हम जो नेगेटिव नंबर होता है, जैसे हमारे पास अगर एक नंबर है जैसे ये -7 है, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते थे रियल नंबर में। तो इसके लिए हमें क्या ऐसे मैथमेटिशियन ने कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बनाया है जिसकी मदद से हम जो है नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने एक जो है आयोटा इज़ नॉट रियल नंबर एंड इज़ कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट, आयोटा को यूज़ किया है। स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इज़ नॉट नेगेटिव, देयरफॉर इज आयोटा इज़ नॉट रियल नंबर एंड इज़ इमेजिनरी नंबर यूज़ किया है। जैसे आपके पास स्क्वायर रूट -7 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट, इसको हम लिखेंगे -7 मल्टीप्लाई -1। अब जो -1 है वो आयोटा स्क्वायर की इक्वल कर लेते हैं हम, यानी आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? -1 के। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं? √7 और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? आयोटा। तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। नेगेटिव -7 का स्क्वायर रूट हमारे पास स्क्वायर रूट 7 और आयोटा आ गया। आयोटा इज़ नॉट रियल नंबर एंड इज़ कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट, इसको रियल नंबर नहीं है, इसको इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। तो आयोटा को यूज़ करके हम जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमें पहले पता चल गया कि आयोटा स्क्वायर है वो किसकी इक्वल है? आयोटा स्क्वायर आपका -1 की इक्वल है। तो आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 की इक्वल है, तो आयोटा आपका किसकी इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर रूट ले तो आयोटा आपके पास स्क्वायर रूट -1 की इक्वल आ जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज है इस बुक की, एक्सरसाइज 1.1, इस बुक की जो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। आयोटा वाई की फॉर्म में इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है √-3। इसका पहला पार्ट √-3, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जैसे पहले भी बताया आपको कि √-3 को हम लिख सकते हैं 3 × -1, और बताया आपको कि -1 जो है वो आपको इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। तो अब इसको हम √3 का √3 नहीं निकल सकता, एग्जैक्ट √3 लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? आयोटा। तो इसको हमने √-3 को
आयोटा वाई की फॉर्म में लिख दिया। ये आयोटा वाई की फॉर्म में आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने करना है 6 अंडर रूट माइनस 4। 6 और अंडर रूट माइनस 4 है। इसमें अब क्या करना है, इसमें वही काम करेंगे। 6 ऐसे ही आ जाएगा 6 और स्क्वायर रूट 4, -4 को 4 इंटू -1 लिखा जा सकता है। अब पेपर आपका ज़्यादातर एसएलओ बेस होता है, जिसमें आपने कंसेप्ट समझने हैं कि किस तरह क्वेश्चन होना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इन्हीं जैसे क्वेश्चन से वो खुद से क्वेश्चन दे सकते हैं, किसी और बुक से पिक कर सकते हैं। इसलिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ये आपके पास 6 आ जाएगा और इसको अंडर रूट 4 और -1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब इसको ये आ जाएगा 6 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आयोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 12 आयोटा आ जाएगा। इस आंसर क्या आ जाएगा, 12 आयोटा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट इस तरह है कि उसमें हमने स्क्वायर रूट -4/9 इसको हमने लिखना है आयोटा वाई की फॉर्म में। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको वही प्रोसेस करेंगे। इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे 4/9 मल्टीप्लाई -1 और फिर इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 आयोटा स्क्वायर बाय 3, क्योंकि हमें पता है कि -1 किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 और आयोटा स्क्वायर का क्या आ जाएगा आयोटा और 9 का क्या आ जाएगा 3। इस तरह ये हमारे पास 2 आयोटा बाय 3 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है इसका, वो है माइनस और फिर स्क्वायर रूट का साइन, उसमें -20 ये है। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन। और 20 को कैसे लिख सकते हैं हम, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 × 5 और ये जो -20 है इसलिए 7, इसके -1 हम लिख देते हैं। अब ये पेयर बन गया, यानी 4 इस पेयर है, इसका स्क्वायर रूट ये 2 × 2 इसलिए इसका स्क्वायर रूट का 2 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, 5 ऐसे ही आ जाएगा। और -1 किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो ये हमारे पास -2 अंडर रूट 5 ऐसे आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर का क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको हमने आयोटा फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या करना है हमने, 4 माइनस स्क्वायर रूट -60 को हमने आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें भी हमने यही करना है कि 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 4 ऐसे ही आ जाएगा, -60 को कैसे लिख सकते हैं, -1 × 60 और फिर आगे हम अगर 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 2 पे डिवाइड होगा, 2 2s are 4, 2 पे डिवाइड होगा, 2 पे 30, फिर 2 पे 15, फिर 2 पे 15 आ जाएगा और फिर 3 पे और फिर 5 पे। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। साथ आखिर में -1 लिख लेते हैं। अब इसमें ये पेयर बन गया, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 4 - 2 आ जाएगा और 3 और 5 ये इनका स्क्वायर रूट नहीं खत्म, ये 15 ऐसे ही आ जाएगा, 15 लिख सकते हैं इसको। 3 5 are 15 और -1 आयोटा स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। तो ये 4 - 2 अंडर रूट 15 और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, आयोटा। ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो 6 पार्ट है इसका, वो है स्क्वायर रूट -8 मल्टीप्लाई
-2, स्क्वायर रूट -2। 6 पार्ट में हमने स्क्वायर रूट -8 और स्क्वायर रूट -2 फाइंड करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 8 को 8 मल्टीप्लाई -1 और इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई -1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको अलग स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 और इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 और साथ लिखेंगे स्क्वायर रूट -1। अब हमें स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 2 को, इन दोनों को पॉजिटिव या इनको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट -1 हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो अगर इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आयोटा आपके पास इक्वल स्क्वायर रूट -1 की इक्वल हो जाता है। तो स्क्वायर रूट -1 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, ऐसे लिख लें। और फिर इस स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख लें और फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और यहाँ 2 के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट 16 का 16 और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 और आयोटा स्क्वायर किसको -1, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4। इसको हम आयोटा वाई की फॉर्म में लिख लिया, -4 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है। 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसमें। क्वेश्चन 2 में हमें 2 कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है सिखाई गई है कि 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और मल्टीप्लाई भी है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन सिखाई गई है। तो यानी आपने इसमें ये दिखाया गया, ये बताया गया, ये हम समझेंगे कि 2 कम्प्लेक्स नंबर को कैसे आपस में ऐड किया जा सकता है और कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें जो पहला कोई भी एग्जांपल ली जा सकती है, जैसे पहले बताया आपको एसएलओ बेस होता है, तो चीज़ें को कंसेप्ट लें, समझें और क्वेश्चन कोई भी आए ताकि आप कर सकें। तो जैसे देखें इस क्वेश्चन 2 में पार्ट्स इसके बहुत सारे हैं लेकिन सारे एक ही जैसी चीज़ें हैं। ये देखें, जिस तरह थर्ड पार्ट है इसमें है -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। ये हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कम्प्लेक्स नंबर का मैं बताता चलूँ आपको कि जैसे देखें ये -2 + 8 आयोटा है। इसमें ये जो पार्ट होता है इसको रियल पार्ट कहते हैं, ये रियल पार्ट है। और ये जो +8 है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ये इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। इसमें अब हम क्या सीख रहे हैं या हम क्या लर्न कर रहे हैं कि 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसका तो रियल पार्ट्स के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा। तो ये आपके पास -2 + 8 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई प्लस -7 माइनस मल्टीप्लाई प्लस -3 आयोटा आ जाएगा। अब जो रियल पार्ट्स हैं -2 और -7 को हम इकट्ठा लिख लेंगे और जो इमेजिनरी है 8 आयोटा और -3 आयोटा को इकट्ठा लिखेंगे। तो -2 और -7 -9 हो जाएगा और +8 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +5 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह इस सवाल में हमने ये लर्न किया कि एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर में से कैसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसी तरह हम देखते हैं कि 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे किया जा सकता है। उसके लिए जो पहला पार्ट है ये देखें, पहले पार्ट में क्या है, 4 माइनस आयोटा और +5 और +5 आयोटा। तो ये 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको आपस में हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ भी वही प्रोसेस होना है। ये 4 है -1 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस और प्लस मल्टीप्लाई प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। इसमें आप फिर वही जो रियल पार्ट है वो आपस में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होगा। तो ये 4 + 5 हो जाएगा और -1 आयोटा और +5 आयोटा। तो यह 4 + 5 9 हो जाएगा।
-1 और +5 से 4 आयोटा आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दो पार्ट्स में हमने सीखा कि कम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह अब एक और लेते हैं जिसमें दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो इसके लिए देखें, पार्ट नंबर 5 है इसी क्वेश्चन का, 2 + 4 आयोटा और साथ है 1 + 2 आयोटा। तो ये जिस तरह सिंपल हम अलजब्रे में अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरह जैसे इस 2 को 1 और +2 आयोटा दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 2 हो जाएगा और 2 प्लस का साइन प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस ही आएगा। 2 × 2 आयोटा से 4 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा और प्लस मल्टीप्लाई प्लस और 4 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे तो 8 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 ऐसे ही आ जाएगा और 4 आयोटा + 4 आयोटा से 8 आयोटा आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 की इक्वल होता है, तो ये 8 × -1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में 2 + 8 आयोटा और प्लस माइनस 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब रियल पार्ट 2 और -8 को कंबाइन करेंगे और इमेजिनरी पार्ट 8 आयोटा अलहदा हो जाएगा। अब 2 - 8 से -6 आ जाएगा और +8 आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कैसे दो जो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है। इसके अलावा इसमें और जो पॉइंट है, जो सीखने की पॉइंट है, वो ये है कि जैसे एक और पार्ट है, 7th पार्ट है। 7th पार्ट में इस तरह है कि -8 आयोटा ब्रैकेट 2 - 2 आयोटा है। अब ये सिंपल सा है, इसको -8 आयोटा को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, जिसका कोई साइन नहीं होता, प्लस का साइन है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और 8 × 2 = 16 आयोटा आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 8 आयोटा × 2 आयोटा से 16 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें पता है कि -8 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आपका इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर या -1 लिख दिया मैंने। तो -8 आयोटा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये -8 आयोटा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 16 आ जाएगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि रियल पार्ट पहले लिखा जाता है, 16 - 8 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ 4 पार्ट्स मैंने किए। उसके बाद इसमें एक और डिफरेंट क्वेश्चन नज़र आ रहा है जिसमें हमने एक्सपेंड करना है। ये है पार्ट नंबर 8 है। इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी। ये हमारे पास है 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब इसको अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। a + b आपको पता है, पिछली क्लासेस से ग्रेड 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म + सेकंड टर्म होल स्क्वायर किसकी होता है? फर्स्ट टर्म स्क्वायर + 2 × फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म + सेकंड टर्म होल स्क्वायर। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। वी एक्सपेंड दिस फर्स्ट टर्म + सेकंड टर्म होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। So first term + second term whole square is equal to first term square + 2. What is first term? 3. What is second term? 2 iota. And next second term whole square, 2 iota whole square. So we will get 3 square is 9, 2 3 is 6, 6 2 is 12, 12 iota, and 2 iota square is 4 iota square. So we know that iota square is equal to -1, therefore 4 and -1. So next step, 9 + 12 iota, and this will be -4 plus multiply -4. Now we combine the real part with together, 9 - 4 plus 12 iota. So the answer is 9 - 4 5 plus 12 iota. This is the answer of this question. So the next question is part number 10 of this question, question number 2, the part 10. In part 10 we also use another algebraic identity
minus, we want to expand, minus 5 minus 3 iota whole square. Now we want to simplify this by using algebraic identity. What we should do, first we take minus 1, minus common these two terms, we take minus common, we take minus 1 instead of minus 1 or minus is the same thing, we take minus 1 common. So here is 5 or minus into minus plus 3 iota and bracket close and whole square. Now we know that this is square is a square of what, minus 1, and also this is square of 5 plus 3 iota. This is a whole square, therefore we take minus 1 ka square and 5 plus 3 iota whole square. Minus 1 square, we know that when we take power of any negative number up to, when we multiply any negative number up to even power, we get plus sign. यहाँ हमारे पास माइनस 1 की पावर आपके पास प्लस है, इवन नंबर है, जब भी किसी नंबर की पावर इवन नंबर में होती है तो वो प्लस बन जाता है. तो माइनस 1 की पावर 2 है, इवन है, इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. और उसके बाद हमने 5 प्लस 3 आयोटा को a प्लस बी होल स्क्वायर, जो ऊपर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखी है उसके मुताबिक हमने इसको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है. तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर. सो वी विल गेट 5 का स्क्वायर कितना था, 25, 2 5 10, 10 3 30 आयोटा और 3 आयोटा होल स्क्वायर इज 9 आयोटा होल स्क्वायर. नाउ वी नो दैट ये 25 30 iota, and we know that iota square is minus 1, so here we get minus 1. So 25, or the next step is plus 30 iota plus minus 9, 25 minus 9 plus 30 iota, 25 minus 9 is 16 plus 30 iota the answer. इसका simplest form में आंसर 16 plus 30 iota हो जाएगा. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका 11th पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, स्टिल क्वेश्चन नंबर 2 है. इसमें 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा और 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा. अब ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं यूज़ हो सकती. अलजेब्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म तो सही था, एक जैसा था, सेम था, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, लेकिन ये जो सेकंड टर्म है अंडर रूट 2 है, यहाँ अंडर रूट 2 है और यहाँ अंडर रूट 3 है. दीज टू टर्म्स आर नॉट सेम, सो वी आर नॉट एबल टू अप्लाई अलजेब्रिक आइडेंटिटी. सो वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट 1 विद दिस होल टर्म एंड देन अंडर रूट 2 आयोटा विद दीज टू टर्म्स. पहले हम क्या करेंगे, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंडर रूट 2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 आयोटा, वी विल गेट अंडर रूट 3 आयोटा. नाउ प्लस मल्टीप्लाई प्लस अंडर रूट 2 आयोटा इंटू 1, वी विल गेट अंडर रूट 2 आयोटा. द नेक्स्ट प्लस मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 6 आ जाएगा. आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, वी विल गेट आयोटा स्क्वायर. Now 1 minus under root 3 iota plus under root 2 iota minus under root 6 iota square is equal to minus 1. We will get 1 minus under root 3 iota plus under root 2 iota and minus multiply minus plus under root 6. Now इसमें कौन से इमेजिनरी पार्ट्स हैं, कौन से रियल पार्ट है, ए 1 के साथ 1 और दिस अंडर रूट 6, दिस हैज़ नो iota sign, so these twos are real part, and under root 3 iota or plus under root 2 iota, we take iota common in these two, so this can be written as under root 2 minus under root 3 iota.
So this is the real part of this complex number and this is the imaginary part of this complex number. So the 12th part of this question number 2 का जो 12 पार्ट है उसमें क्या करना है आपने, वो है अंडर रूट टू प्लस आयोटा और अंडर रूट टू माइनस आयोटा। इसमें अब आपके पास ये देखें क्या आपके पास है, यहाँ क्लियर लिख देते हैं, अंडर रूट टू प्लस आयोटा और अंडर रूट टू माइनस आयोटा। अब फर्स्ट टर्म एग्जैक्टली सेम है, सेकंड टर्म आयोटा एग्जैक्टली सेम है, दे हैव ऑपोजिट साइन, सो हियर वी अप्लाई algebraic identity. First term a plus b, a minus b, this is equal to a square minus b square. So here we write according this algebraic identity, first term are same, second term are same, and they have both opposite signs, so therefore they can be multiplied by using this algebraic identity. So we can write under root 2 whole square minus iota whole square. This square root cancels with this 2 sign, so we will get 2 minus iota square, and we know that iota square is equal to minus 1, so 2 minus plus, so the answer is 3. So the final answer of this question is 3. So this is the last part of question number 2. Now we will start the next question number 3. The next question is question number 3. What is question number 3? Question number 3 is only simplify. In question number 3, we should only simplify the given values. What is the given value? The first part is iota power 9. Now we know that iota square is equal to minus 1. So we will try to write iota 9 in the form of multiple of 2. Iota 9 is not a multiple of 2, so this can be written as iota power 8 multiply iota power 1. 8 plus 1 is equal to 9. So iota 8 can be written as iota square whole power 4 multiply iota, and we know that iota square is equal to minus 1, so minus 1 power, we can write iota square minus 1 and minus 1 power 4 multiply iota, and we note when we have a negative number in the bracket and the power is even number, it become positive. So minus 1 power minus 1, the power is even number, so therefore it become plus 1 multiply iota, so answer is iota. Simple answer is iota. So second part of this question is, the second part is iota 13. Once again we know that 13 is not the multiple of 2, so it can be written as iota 12 multiply iota, and we know that 12 is the multiple of 2, so iota square power 6 multiply iota, and we know that iota square is equal to minus 1, so minus 1 power 6 multiply iota, and I explained earlier that when in a bracket we have a negative sign and its power is even number, it become positive, so we will get plus 1 multiply iota, so the answer of this iota 13 is also iota. The third part is iota power 28. Third part is iota power 28, and we know that iota 28 is a multiple of 2, so it can be written as iota 2 power 14, and we know that iota square is equal to minus 1, so minus 1 power 14. So once again I explained that when we multiply negative number even time, we will get the positive sign, so within bracket we have a minus sign, but its power is even, so it become plus, so answer is plus 1. So iota 28 can be written as plus 1.
So next, fourth part. In the fourth part is that we should simplify minus iota power 21, minus iota power 21. So in bracket we have a negative sign, and its power is odd number. When in a bracket we have a negative sign and its power is odd number, this negative sign remains negative. So what's I want to tell you that when we have a bracket, in the bracket sign we have negative sign and its power, its exponent is odd number, then this negative sign remain, because when we multiply negative sign odd time, we will get negative sign. So it can be written as minus iota power 21. So we know that iota 21 is not a multiple of 2, so it can be written as minus iota power 20 multiply iota power 1. So now this minus iota 20 can be written as iota 2 power 10 multiply iota. So in the next term we know that iota square is equal to minus 1 power 10 multiply iota, and here once again we have a negative sign and its power is even number, therefore it become plus. Minus, this is a minus sign, and minus 1 power 10 become plus, or this can also written as minus 1 plus 10 multiply iota, or in the next step minus multiply plus minus, and minus 1 multiply iota, we will get minus iota. The answer is minus iota. The next fifth part, in fifth part we want to simplify 3 iota power 3. So this in this question we have 3 iota and whole power 3. So this 3 is the power of 3 also, 3 power 3 iota power 3. 3 power 3 mean 3 multiply 3 27, and iota power 3 can be written as iota multiply iota square, iota power 1 multiply iota power square. 27 iota and iota square is equal to minus 1 plus multiply minus 27 iota is the answer of this question. And the last part of this question is that in which we want to simplify part 6 bracket. We have a bracket and within the bracket 2 iota whole power plus 4. In this case, once again the point is here, we have a minus negative sign within bracket, but its power is even number, so this minus will become positive. So we will ignore this minus, that this minus will be changed into positive number. Minus power is plus 4 even number, so this minus become positive, and 2 power 4 iota power 4. 2 power 4 mean 2 multiply 4 times 2 multiply 2 multiply 2, this is 16, and iota 4 can be written as iota square power 2, and we know that iota square is minus 1, so minus 1 power 2. Once again that the previous point arise, when we have a minus sign and its power is even number, so it become plus, so minus 1 power 2 we will get plus, and the answer is 16. So this is the last part of question number 3 of exercise 1.1. we want to simplify minus 2 iota whole power 4. There is positive even, therefore its negative sign become plus. 2 power 4 iota 4, 2 power 4 means 16, iota 4 iota square whole power 2, iota square is equal to minus 1, so minus 1 power 4 2, or once again this is a power even, so this minus become plus, so 16 ones are 16, we will get the answer 16. The next question, question number 4 of exercise 1.1 is simplify in the form of a plus b iota. The first part of this question is that 9 plus iota 6. We want to write this in this form, a plus b iota. So 9, this 9 can be written as 9, and iota 6 can be written as iota 2 power
3. Iota 2 power 3, because 2 3s are 6, and we know that 9 plus iota square is equal to minus 1, so minus 1 power 3. And we know that I explained earlier, once again I explained, when we in a bracket we have a negative sign and its power is we have a point within a bracket. When we have a minus sign and its power is odd number, it remain negative, so minus 1 power 3 we will get minus 1. So 9 plus minus minus 1, the answer is 9 minus 1 is 8. So this can be written as a plus b iota form, 8 plus 0 iota. The next part is next part of this question is minus 17 plus iota power 5. Now we want to write this in form of a plus b iota form. So minus 17 can be written as same, and iota power 5 can be written as iota power 4 multiple iota power 1. Why? Because 5 is not a multiple of 2. So we write in the form of multiple of 2. Minus 17 plus iota power 4 can be written as iota 2 power 2 multiply iota. Now minus 17 plus iota square is equal to minus 1 power 2 multiply iota. And we know that when we have a negative sign and its power is even number, it become plus. So minus 1 power 2, it become plus 1 multiply iota. So this is the minus 17 plus iota is the simplest form of this question, which can be written as a plus b iota form. The next third part of this question is that iota power 4 minus 13 iota. Now we want to write this in a plus b iota form. So iota 4 is a multiple of 2, so it can be written as iota square whole power 2 minus 13 iota, and iota square is equal to minus 1, so minus 1 whole square minus 13 iota. And we know, and I repeat this point again and again, when we have in a bracket we have negative sign and its power is even number, so minus 1 power 2, it become plus 1 minus 13 iota. So this is the iota power 4 minus 13 iota is reduced in the form of a plus b iota form. The fourth part of this question number 4 is iota power 5 plus 21 iota. So iota power 5 can be written as iota power 4 multiply iota power 1 plus 21 iota. Its further simplification not possible. Iota 4 can be written as iota square power 2 multiply iota plus 21 iota and 21 iota. Iota square is equal to minus 1 power 2 multiply iota plus 21 iota minus 1. When we take minus 1 square, it become plus 1 multiply iota plus 21 iota. So now 1 multiply iota, we will get iota plus 21 iota. So 1 iota and plus 21 iota both are added to each other, which will become 22 iota. This can be written as a plus b 0 plus 22 iota. 0 plus 22 iota is the answer. The next part number 5 is iota power 5 plus iota power 7. Now we want to write this in the form of a plus b iota. Iota 5 is null multiple of 2, so it can be written as iota power 4 multiply iota power 1. Similarly, iota power 6 multiply iota power 1. So iota 4 is in the form of iota square whole square multiply iota. Iota 6 can also written as iota square whole power cube multiply iota.
So iota square, we know that iota square is equal to minus 1 power 2 multiply iota, and similarly minus 1 power 3 multiply iota. Here is more simplification, more explanation. Here we get minus sign and power is even, so it become plus 1 multiply iota, and this case we have negative sign and power is odd number, so it remain negative minus 1 multiply iota. We will get 1 into iota plus minus minus 1 into minus 1 into iota, plus into minus 1 into iota. So plus iota and minus iota will be cancel each other, we will get 0, and this can be also in the form of a plus b iota, 0 plus 0, 0 plus b iota, 0 plus 0 plus 0 iota. This can be written as 0 plus 0 iota. So last part of question number 6 is that iota power 74, and minus iota power minus 100. This is iota power minus 100. So iota 74 is a multiple of 2. So this can be written as iota square or whole power 37, and this is iota power minus 100 so it shifted in denominators in order to its exponent become positive. So it is iota power minus 100 in numerator, it is shifted to denominator to change its power positive. We know that iota square is equal to minus 1 to minus 1 power 37 minus, and iota 100, and 100 is a multiple of 2, so it can be written as 2 iota square whole power 50. So once again we have a negative sign within bracket and we have odd power, so it remain negative, so we will get minus 1 by minus 1 power 50. So minus 1 and minus, and here we get negative sign, its power is even number, so it change into positive number, then and 1 power 50 it remains 1, so we will get plus 1. So minus 1 and minus 1 by 1 we will get 1. So minus 1 and minus 1 both are added to each other, we will get minus 2, and this can be written as minus 2 plus 0 iota. This is the its simplest form, and it can be written in a plus b iota form. Last question of exercise 1.1 is divide and simplify in the form of a plus b iota. In this question we will learn how we can divide two complex numbers. Before this we learned that how we can add two complex numbers and how we can subtract two complex numbers and how we should multiply two complex numbers, and also we simplify the complex number in the simplest form. And in this question our objective is we should learn how we divide two complex numbers. So in this is the first part of this question is 3 by 4 iota, 4 minus iota. Now we want to simplify this question. There basically two complex numbers and we want to learn their division. So for this purpose we multiplying and dividing by conjugate of denominator. So there in denominator there is 4 minus iota. So what is conjugate of this number? For conjugate we change only sign of imaginary part of complex number. So for simplifying, in order to simplify this we multiplying and dividing by conjugate of denominator we multiply this number by the conjugate of denominator, and we will get 3 by 4 minus iota multiply 4 plus iota by 4 plus iota. We multiply and divide by the conjugate of this denominator.
In numerator we multiply 3 with 4 plus iota. In denominator we will multiply these two by using algebraic identity. This algebraic identity, first term plus second term, first term minus second term, always equal to first term square minus second term square. Therefore first term, this, when we apply this conjugate, when we have two values we want to multiply, and their first term exactly same, and second term are exactly same, and they both have negative sign, so we will multiply the two value with the help of this algebraic identity. So here we will get first term square minus second term square. In the numerator we multiply 3 within bracket, we will get 12 plus 3 iota, and in denominator 4, the square of 4 is 16 and minus iota square, and we know that iota square is equal to minus 1, so 12 plus 3 iota, and in denominator 16 minus iota square is equal to minus 1, so here we put minus 1 sign. Iotas, in the place of iota square we write minus 1. So next step, 12 plus 3 iota by 16, minus into minus plus, so this is the 12 plus 3 iota by 17. Now this can be written as a plus b iota, 12 by 17 plus 3 by 17 iota. This is its real part, this is its real parts, this is its real part, and this is a imaginary part. This is the simplest form of 3 by 4 minus iota. The next part is second part is 3 iota by 6 plus 5 iota. So what is the conjugate of denominator 6 minus iota? We multiplying and dividing by conjugate of denominator. So we multiply this value by and divide this value by denominator by the conjugate of denominator of this 6 plus 5 iota. So what is conjugate 6 minus 5 iota? So this is 3 iota by 6 plus 5 iota. So what is conjugate of this 6 minus 5 iota? We multiply this by conjugate of denominator of this, so, and also we multiply 6 minus iota. In numerator 3 iota is multiplying with 6 minus 5 iota, and denominator, in every part we apply algebraic identity, which we discussed previously in previous parts. A plus b, first term plus second term, first term minus second term, this will be equal to first term square minus second term whole square. So we next part 3 iota multiply with 6, we will get 18 iota, 3 iota plus multiply minus 3 iota into 5 iota, 15 iota. In denominator 6, the square of 6 is 36, or minus 5 iota square is 25 iota square. And here we'll get 3 iota into 5 iota, 15 iota square. So here is 18 iota minus 15, and iota square is equal to minus 1, and in denominator 36 minus 25, and iota square is equal to minus 1. So in next step, 18 iota minus into minus plus 15 divided by 36 minus to minus plus 25. So this can be written as 15, we write 15 before and after 18 iota, and denominator 36 plus 21 we will get 51.
So this can be written as 15 by 51 and plus 18 by 51 iota. So this is the form of 3 iota by 6 plus 5 iota. In the a plus b iota form we can write it.